Yes. Friends, welcome back, and we know that we are all assembled here for 2 days deliberation. Ravi Kashi, who conceptualized this program, is going to speak now. He is going to give you a broad outline, how, when, and how it's going to work out, and also how it has started initially. After that, all the participants will make their personal introduction, not more than 3 minutes. However, in the afternoon, after the lunch, we are once again going to meet, and during that time, it's an open session. All of us are going to speak about our work very briefly. So, first, Ravi Kashi is going to give the outline of the 2 days deliberation and about the conclave, and immediately after that, all the participants are going to speak only for 3 minutes. So please maintain the time. And now over to Ravi. I think invite Ravi Kashi to give the outline. Thank you. Good morning and welcome to one and all. I have written something, so I want to share it with you. First of all, on behalf of the art writers community, I would like to congratulate and thank Sri Krishna Shetty and Lalit Akademi for making this event a reality, for seeing a value in this initiative and committing resources and time. On a personal note, I would like to thank all the writers who have come here believing in this idea. Many of you have expressed that this was long overdue. At last, a beginning is being made, though I see this conclave as a tentative, imperfect beginning. The event itself is being called a conclave of Indian language art writers, keeping in mind the connotations of using words like regional or vernacular would have elicited. We wanted to suggest a level playing field to all languages devoid of hierarchy. When I shared this initial idea with Sri Krishna Shetty around the end of last year, that we should have this Indian language art writers conclave, he was very enthusiastic about it, and I was doing personally with sheer enthusiasm rather than a studied scholarly pursuit. And as many of you know, I don't have an academic background. I'm an artist and I write an art occasionally. Since he is an art writer himself, he was able to immediately appreciate the value of such an event. I don't know if it was somebody else at the helm, the response would have been the same. The event itself is unique, as we have been discussing from morning. As far as I know, there has been no occasion before where so many art writers writing in various Indian languages have gathered in such numbers in one place. There have been some efforts before, but not in this scale. It is fascinating that art writing in each Indian language brings its own histories, distinctive cultural aspects and narratives to the fore. But it is an uncharted territory. As individuals, we are aware that art writing is happening in many Indian languages, but have a vague idea of some names of writers, books. We know it is intense in some languages compared to others, but all this is a haze and there is no clarity. Even though physically we are close by, bound by the idea of a nation, we are like islands in terms of knowing each other's writings. Perhaps many of us are aware of some new book or author written on art in an English from faraway place rather than something written in another Indian language. What is lacking is connectivity. What is lacking is information. Basically, when I started collecting the information, it was so difficult to get in one place. Neither the Akademi had, nor the Sahitya Akademi had. The state Lalit Academies were not so responsive. So then I started calling friends and through friends. So that is how we have been able to gather the information on who is writing in which language, and again because of the linkages
the information is not so accurate also. What is lacking is authentic documentation. What is lacking is identification of overlapping areas, shared areas of interest, shared areas of hope and anxiety. What is lacking is common platform. What is lacking is a bigger picture. Towards resolving this conclave will be a small step. As we come to know each other better, there will be many more links that will be established, ending the isolation. Hopefully, with the cooperation of the Lalit Akademi or other agencies, we will be able to meet again and again and have continuous dialogue. Such a forum will be able to bring art writers from various Indian languages into one platform, where variety of issues related to writing on visual art in Indian languages can be discussed, deliberated and articulated. In this digital era, meeting need not be on a physical level also. Our meeting platform could be the virtual world as well. There are so many issues to deliberate and dialogue about. I will not start listing them here because I assume that as the sessions progress, all those aspects will come to the fore. I would like to give a quick glance about what is the program for today and tomorrow night. A quick glance at the structure of the program. One of the important aspects of this conclave is meeting and knowing each other. So an entire session is dedicated to introducing ourselves. And before lunch, I think only about 20 people will be able to do. So post lunch, that session will continue. So an entire session is dedicated to introducing ourselves. Other than that, 4 sessions have been designed to weave our discussion around some of the prominent themes. So these are the 4 themes: bilingualism and the role of translation in countering insularity in Indian language writing. The second session, that is tomorrow morning session, is documentation, archives and new research in Indian languages art writing. The next session is changing role of Indian art writing, some contemporary issues, Indian languages art writing in pedagogy, possibilities and challenges. So these are the 4 sessions which are woven around themes. Though the themes have been segregated, it is obvious that they don't remain in isolation in reality, but overlap, interject and affect each other. In each session there will be 2 speakers who will do short presentations and open up the area of discussion. Once those presentations are over, the floor is open for discussion and sharing. On end of the day 1, that is today, last session of today, has been dedicated for an open forum discussion, and it can give us a glimpse of what is happening in each of the languages from which we have participation. A detailed program, and this is already in your kit, so you should be able to see that and refer from time to time. I would like to conclude. I said it's an imperfect beginning. There have been many gaps. As I've been talking to people, more and more I can see that mistakes have happened from our side. These have happened for various reasons, and my apologies are due there. I hope you will appreciate the sincerity of intention and fill the gap with warmth and abundant enthusiasm. On a personal note, I would like to thank Sahitya, Sneha, Vidya, Rabindra Kulkarni, Anil and Vasuvi for helping me shape this program. A seed is nevertheless being sown, and in due time, hopefully we will see the flowering of the tree. Thank you. Yeah, can we start a self-introduction? All of us are going to speak about ourselves. You can pass it. Yeah. We will start with Krishna Shetty sir, because as we know in Kannada, as a student we have been reading, and now also he consistently write in Kannada. So with him we start the introduction, brief introduction. My name is Krishna Shetty. Basically I am from Bangalore. I wanted to be a creative artist, and I was a creative artist. When there was need of art writing in Kannada, people around me and the artists around me forced me to write. They thought I have capabilities in Kannada writing as well as in English. So because of their force, I ventured into art writing, and almost more than 20-25 years I was columnist for Prajavani, Kannada Prabha, Lokavani and Deccan Herald as well.
I have written some 5-6 books on art, and also I have given lectures, I have presented papers in many seminars. Though I have written only 5-6 books, I have material for publication of another 3-4 books right now, because no publisher came forward or I could not able to publish myself. It's pending. I was chairman of Lalit Kala Akademi as well in Karnataka. There also I tried to do some kind of these kind of conclaves and conventions. Right now I am heading the Lalit Kala Akademi, New Delhi. That's all. मेरा नाम मनोज कुमार बच्चन है, मैं पटना से हूँ। 1983 में मैंने पटना ऑडिटोरियम में नामांकन लिया था। उसके बाद से मैं वहीं हूँ, पटना में स्थायी रूप से रहता हूँ। वहाँ के अखबारों के लिए कला लेखन करता हूँ और लगभग 600 से ऊपर आर्टिकल्स मेरे पब्लिश हो चुके हैं हिंदी के वहाँ के सारे अखबारों में। मैं 1991 में पटना दूरदर्शन से जुड़ा। मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाई, जिसमें इतिहास बन गई पटना कलम, और एक ग्रेट पोइट भावन नागार्जुन पर एक हमारी फिल्म है सदी का यात्री नागार्जुन, और हार्मन कॉर्मर हिंदू मुस्लिम एकता पर एक हमारी फिल्म थी एकता का दीप। और मैं भी विभिन्न पत्रिकाओं में लिख रहा हूँ, जो पत्रिकाएं वहीं बिहार से ही निकलती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजेश कुमार व्यास राजस्थान से हूँ, जयपुर से। कलाओं पे पता नहीं कब से रुचि हो गई थी उनको देखने की, और देखते देखते थोड़ा कुछ लिखने लग गया मैं। रिसेंटली ललित कला अकेडमी की मैगजीन समकालीन कला जो है उसका अतिथि संपादन का भार मुझे दिया गया था। 49 अंक मैंने अतिथि संपादक के रूप में किया उसका, और उसको कलाओं के अंतर संबंधों पर ही केंद्रित किया। ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि मैं पिछले 25 साल से राजस्थान पत्रिका, दैनिक नवज्योति और अभी पत्रिका समूह के न्यूज टुडे में सफरनामा एक कॉलम वीकली लिख रहा हूँ मैं। मुझे इस रूप में प्रसन्नता है कि लिखना शायद इसलिए हो पाता है कलाओं पे कि एब्स्ट्रैक्ट और तमाम मूड पे लिखना रेगुलर में लिखता हूँ। ललित कला अकादमी राजस्थान ने एक कला वाक नाम से मेरी किताब पब्लिश की थी। वो दरअसल कॉलम ही थे मेरे जो नवज्योति में छपा करते थे। एक रंगनाद मेरी पुस्तक वाग्देवी से पब्लिश हुई, जिसमें संगीत, नृत्य और चित्रकलाओं पे, बल्कि फोटोग्राफी पर भी उसमें एकाग्र है। उसमें एक भारतीय कला अभी राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी ने पब्लिश की है। 25 साल से लिखते मुझे यूँ लगता है कि लिखने का शायद एक एम यह भी होता है कि हम पाठकों की रसिकता जगा सकें, और मुझे लगता है कि जो खुद रसिक नहीं होता वो रसिकता शायद जगा नहीं सकता है। यात्रा वृत्तांत भी मेरे नेशनल ट्रस्ट इंडिया से एक पब्लिश है, सूरजो सजे है, लेकिन मुझे लगता है अपने आप का परिचय देना सबसे मुश्किल काम होता है। इस मुश्किल काम को शायद रवि काशी ने आसान बनाया है, और मुझे इस रूप में भी थैंक्स रवि काशी का देना बनता है कि ऐसा शायद पहली बार हुआ हिंदुस्तान में कि तमाम लोग जो है एक मंच के साथ यहाँ एकत्र हुए हैं। मुझे थोड़ी नाराजगी हुई शुरुआत में रवि काशी के साथ में, जब उन्होंने मेरे नाम के साथ दिया राजस्थानी। मुझे लगता है उन्होंने ठीक किया, राजस्थानी दिया साथ राजस्थानी भाषा से। मैं राजस्थानी को भी रिप्रेजेंट करता हूँ निश्चित रूप से, क्योंकि मेरा एक कविता संग्रह जो राजस्थानी भाषा अकादमी ने सम्मानित किया, जिसको साहित्य अकादमी। नमस्कार, मेरा नाम देव प्रकाश चौधरी है। मैं मूलतः चित्रकार हूँ, लेकिन पेशे से एक अखबार में संपादक हूँ। विगत 2 दशक से ज़्यादा हो गए मैं कला पर लिखता रहा हूँ। कला को देखने के लिए अभ्यस्त आंखें चाहिए। खुद को अभ्यस्त कर रहा हूँ और चाहता हूँ कि कला पर जो लेखन हो वो इतना गंभीर ना हो कि आम आदमी तक पहुँच ही ना पाए। नमस्कार, मैं आलोक पराड़कर हूँ लखनऊ से। और जैसा कि बाकी सभी ने कहा कि अपने बारे में कुछ कहना बड़ा मुश्किल है, मैं कहता हूँ कि एक नैतिक संकोच भी होता है कि अपने बारे में क्या बताया जाए। फिर भी एक दूसरे से परिचय का सत्र है तो कुछ बातें ज़रूरी है। जैसे कि मैं करीब 27 सालों से हिंदी पत्रकारिता पे लेखन कर रहा हूँ, और जैसा कि शेट्टी साहब ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा था कि अखबारों में जो कला लेखन है
उसको लेके बहुत सारी दिक्कतें हैं। जैसे अखबार के भीतर अगर आप हैं और कला पे लिख रहे हैं तो वहाँ आप हाशिए पे हैं, और अगर अखबार के बाहर हैं तो इतनी गुंजाइश नहीं है कि केवल कला लेखन करके आप अपना जीविकोपार्जन कर सकते हैं। तो इन मुश्किलों के बीच आपको कला के अपनी जो एक रुचि है उसको बनाए रखना है, और शायद यही एक तड़प थी कि मैंने एक पत्रिका की शुरुआत करने का सोची और कला स्रोत नाम से पत्रिका हम लोग पिछले 2 सालों से लखनऊ से निकाल रहे हैं, जिसमें कला के साथ ही रंगमंच और संगीत से जुड़ी चीज़ें भी हम लोग शामिल करते हैं। इसके साथ ही अपने लेखों का एक संकलन भी प्रकाशित किया है हिंदी संस्थान की ओर से। और बराबर कई बार होता है कि आपके सामने ये अवसर आते हैं कि आपसे कहा जाए कि आप ये किन विषयों पे लिख रहे हैं, आप कुछ और चीज़ों पे लिखिए, ताकि आपकी पत्रकारिता में ज़्यादा आपकी उन्नति हो सके। लेकिन जो एक अंदर की एक रुचि, अंदर की ललक होती है, शायद वो आपको अपने विषयों से जोड़ती रहती है। मेरी जो शिक्षा दीक्षा बनारस में हुई, वहाँ का कला का, चाहे वो संगीत का हो, चाहे वो दृश्य कला संकाय काशी विश्वविद्यालय का हो, जहाँ कट साहब थे, जहाँ बहुत सारे कलाकारों के बीच रहने का, सीखने का अवसर मिला। बाद में सुक्कार जी या दिलीप दास गुप्ता जैसे कलाकारों के बीच रहने का अवसर मिला। तो एक कला को देखने की एक इच्छा हुई और एक देखने का नज़रिया विकसित हुआ। जैसा कि अभी साथी ने कहा कि जो क्षेत्रीय भाषाओं में लोग काम कर रहे हैं, शायद वो एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं कि जो हमारी एक लोक कला है वो उस तरह से राष्ट्रीय स्तर पे नहीं आ पा रही है जैसे उसको आना चाहिए। वो काम वहाँ के कला लेखकों का एक दायित्व है। अगर हम उन भारतीय भाषाओं के लेखों की चीज़ों को दूसरी भाषाओं में अनुदित करते हैं और उसको सामने लाते हैं, तो हमें लगता है ये न सिर्फ कला लेखन का बल्कि उस कला का भी एक बहुत बड़ा कला के लिए काम होगा। और लगता है इस सम्मेलन के माध्यम से इसकी शुरुआत हो रही है। थैंक यू everyone. Was started or I became interested in this field, and since then it's been now 7 years that I've associated myself with questions about research in Indian languages, about art and archiving, and I'm really looking forward to these 2 days conclave and hope to hear from all of you. Thanks. Hello, I am Nupur Desai. I am from Pune, Maharashtra. I studied art history from Baroda, Faculty of Fine Arts, and after that I worked with a couple of art and culture organizations in Delhi and Bombay. Currently I am doing my PhD from the School of Media and Cultural Studies, TISS Bombay, and my research is around public art, public space and contemporary art. After studying art history, of course, while I was working, I was also writing. But in recent years, I have also started writing in Marathi, and the impetus was a project that I did with Asia Art Archive, their publication project, where we were looking at art writings in Marathi from Marathi periodicals, which paved a way for me to start writing in Marathi. And currently I'm also co-editing an online bilingual online journal called Hakara, Journal of Creative Expression, where it's a platform for different kinds of artistic expressions, right from visual arts, performing arts, literature, film studies, and etc. Yeah, thank you. Good afternoon. I'm Nirmala Biluka. I'm from Hyderabad. Actually, I'm a practicing artist. I did my master's from Baroda University, MS University, and right now I'm doing my PhD in film and visual culture. My area of interest has been regional art since I joined PhD, and actually, as Nupur was saying, even I was part of the Asia Art Archive bibliography project, and I was looking at art historical writings in vernacular in Hyderabad. I'm Kapilas Punya from Ferozeshah, Odisha.
after getting this invitation to come here, I was a little confused actually. What is it? And thanks to Mr. Krishna Shetty, he unrolled the whole concept in a very clear manner. So, I have been dabbling with many art forms like theatre, painting, cinema, writing for the last 3 decades. I started writing about art in the mid-80s when there was no space was earmarked for art writing. But we claimed that space for the artists, and I have almost written about it, starting from Dr. Dinnath Party up to a little guard sitting somewhere here. And the most recent responsibility I had carried out staying in Bhubaneswar, which kind of a month-long residency of artists from all over the country, is called Setu. So we have already started working towards that, like artists from all places will come, bridging the arts. And now we have come to a point where bridging art writing, I look forward to getting writing in coming days. Thanks. Namaskar, I'm Amit Kalla. I'm from Jaipur. As Rajesh ji told me, it's very difficult to say about self. And in Indian context, तो बहुत ही मुश्किल है. रमन महर्षि याद आते हैं, महर्षि अनिर्वाण याद आते हैं. बहुत मुश्किल है अपने बारे में कहना. और जब आपके टीचर्स बैठे हों पीछे क्लब में, तो I did my masters from JNU, School of Art and Aesthetics, and also I studied the art history from National Museum. Presently I am writing some articles in newspapers, some columns, and बस यही सब कुछ है. थोड़ा थोड़ा सा मैं आर्टिस्ट, पेंटिंग करता हूँ, पोइट्री लिखता हूँ. 3 books are published. और एक ग्रुप बनाया है हमने जहाँ पर हम इसी तरीके की चीज़ें करते हैं, शेयर बातचीत करने की कोशिश करते हैं. और जो एक्सपीरियंशियल पॉइंट ऑफ व्यू है आर्ट का, उस पर हमारा फोकस होता है. मतलब इंस्टेड ऑफ एक बायोग्राफिकल, आपने कैसा, मैंने ऐसा बनाया, ये किया, आपने अनुभव क्या किया कला में, आपकी ऐसी कौन से फोर्सेस हैं जो आपको फोर्स करते हैं, आपको अंदर से कहते हैं कि आप पेंटिंग करिए, आप पेंटिंग क्यों करते हैं, आप तो ये बताइए सर. तो इस तरीके के कलर्स को लेके आप क्या सोचते हैं. तो मतलब साइकोलॉजिकल नहीं कहेंगे, एक भारतीय तत्व जो है, इंडियनिटी, आपको मतलब आपके रूट्स क्या कहते हैं उन रंगों के प्रति, उन रेखाओं के प्रति, आपका मतलब उस तरीके से हम जानने की कोशिश करते हैं. और बहुत सारे लोग हैं जी हमारे वहाँ पे जो चाहते हैं कि आप लोग भी उधर आएँ और उनसे बात करें. तो मैं भी उनमें से. मैं विनोद भारद्वाज हूँ. लखनऊ में मेरी पैदाइश है, और जब मैं 17-18 साल का था तो गोभी सरोज पाल और उनके प्रिंट मेकर हस्बैंड जैक थी, क्योंकि हम लोग एक कविता कला की पत्रिका निकालते थे. ज़्यादातर हम लोग पोइट्री से ही आर्ट क्रिटिसिज्म में आए थे. क्योंकि उस ज़माने में रिल्के या एपोलिनियर को पढ़ के आपको लगता है कि जैसे कि आप पेंटिंग लिखना शुरू करें. लेकिन मेरी जो रियल एजुकेशन है जॉन बर्जर से है, क्योंकि मैं ब्रिटिश एडिक्ट था उस ज़माने में, और वहाँ पर एक न्यू सोसाइटी अखबार में जॉन बर्जर का कॉलम पढ़ा. उससे मैंने ये सीखा कि आप कितनी क्लैरिटी से लिख सकते हैं. ही वॉज ऑल्सो ए पोइट, देखिए बर्जर पोइट था, लेकिन वो पोइटिक लैंग्वेज में नहीं लिखता था, विजन के साथ लिखता था. तो मैंने वो बात सीखी. तो मैंने सोचा हिंदी में अगर लिखें तो आसान भाषा में कैसे लिखें, क्योंकि एकेडमिक लैंग्वेज मैंने 1-2 किताबें देखी तो उसमें धनबाद यानी क्यूबिज्म पे चैप्टर था, वो इतना बोरिंग था कि उसको पढ़ने के बाद मैं ही कुछ समझ नहीं पा रहा था. तो मैं सोच रहा था कि स्टूडेंट क्या पढ़ें. तो एक मैंने सीरीज लिखी है अखबार में, जनसत्ता में, तो उसके एडिटर जो हैं, उस पेज के एडिटर कोई थे मंगली दबाव. तो मैंने सारे इज्म पर एक सीरीज लिखी आसान भाषा में, जो इंसाइक्लोपीडिया एक बना 89 में. तो उस इंसाइक्लोपीडिया का देखिए महत्व क्या है कि बिहार के कई युवा कलाकार जो आज नाम जिनका बहुत है, सामोगी हो, सुबोध गुप्ता हो,
नरेंद्र पाल सिंह हो, ये सब लोग, संजय सिन्हा थे, ये सब लोग मेरी किताब को, चूँकि उन दिनों पैसे नहीं होते थे, 400 रुपये उनके पास नहीं होते थे, तो वो लोग उसकी फ़ोटो कॉपी कराते थे और फ़ोटो कॉपी करा के वो किताब फट गई। नरेंद्र पाल सिंह का कहना है कि मेरी ओरिजिनल बुक तो फटी गई। और सुबोध गुप्ता 93 में जब मेरे पास दिग्मान में आए तो उस किताब की वजह से, यानी तब सुबोध गुप्ता वो नहीं थे जो आज है। लेकिन जो मैंने एक चीज़ देखी, मैं दो बातें जो फोकस करना चाहता हूँ कि हम लोगों ने जो आर्ट सीखी है वो आर्टिस्ट के स्टूडियो में जाके सीखी है। मैंने तो स्वामी नाथन से लेके सूदा, राम कुमार, बाकी जनरेशन के लोग हैं, ये भी कह सकते हैं कि उस समय इन लोगों से संवाद पॉसिबल था। जैसे मुझे याद है कि 70s में आप किसी भी बड़े कलाकार से बड़े आसानी से संवाद कर सकते थे। आज मुझे सुबोध गुप्ता से अपॉइंटमेंट लेना पड़ा है, जो मुझसे कभी मिलने के लिए लाइन लगा के बैठा हुआ था, जिसका लेकिन देखिए, अब विचित्र कला बाजार भी एक अजीब चीज़ है कि जब सुबोध के लिए मैंने वेनिस का कैटलॉग में कंट्रीब्यूट किया तो उसने मुझे एक ड्राइंग दी जो वैगेस सीरीज़ की थी, जिससे मुझे जितना पैसा मिला उतना मेरी ज़िंदगी भर की राइटिंग से नहीं मिला, यानी कि 6.25 लाख। मैंने क्या किया कि अगर मैं ललित कला अकेडमी को अप्रोच करूँगा या ICCR को करूँगा तो वो लोग मुझे कहीं नहीं भेजेंगे। एक तो वैसे भी जो कला की भाषा है देव भाषा है, देव भाषा संस्कृत नहीं अंग्रेजी है, और उसमें जो कुछ भी मिलता है, आप देखिए कि रीजनल लैंग्वेजेस के आदमी को बाहर जाने का मौका कहाँ मिलेगा। तो मैंने ये फैसला किया कि सारा पैसा जो भी मिलेगा मुझे, जैसे हुसैन ने मुझे स्केच कर दिया, सूजा ने कुछ बना के दे दिया, तो सूजा तो बहुत इस मामले में उदार आदमी था, ऐसा आदमी तो मैंने कुछ देखा नहीं। वो तो 12 ड्राइंग आपके हाथ में पकड़ा देता था, कहता है आपने मेरी कविता का अनुवाद किया भाई। तो एक वो दुनिया दूसरी थी। आज मैं देख रहा हूँ कि उस 6.25 लाख से मैंने पहला काम क्या किया, बिलबाओ में जाके गगनहाइम म्यूजियम देखा। क्योंकि आप कैसे देखेंगे ये दुनिया, आप लिखते हिंदी में हैं, हिंदी को लोग सेकंड, मतलब भले कहने को राष्ट्रभाषा है, लेकिन अब मैं दुखद बात यह है कि अब जब मैं काफ़ी सीनियर हो गया हूँ तो मुझे ज़्यादातर पैसा अंग्रेज़ी के काम से मिल रहा है। ये जितनी भी किताबें मैं इन दिनों बना रहा हूँ वो अंग्रेज़ी में हैं और उसका पैसा मुझे मिलता है। लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि हिंदी जब भी मैं जाता हूँ राजस्थान, बिहार, तो लड़के लड़कियाँ आती हैं और कहती हैं कि हमने आपकी किताब पढ़ी और हमें उसमें भाषा आसान लगी। ये मुझे लगता है कि एक मेरे जो जीवन का मुझे अपना कंट्रीब्यूशन। और दूसरा, मैंने सिनेमा में काफ़ी काम किया, कई फिल्म हम लोगों ने, चूँकि विक्रम सिंह के साथ करीब 50 फिल्में मैंने आर्ट पे बनाई, उससे मुझे सीखने का बहुत मौका मिला। चूँकि 90s में हमने स्टोरी ऑफ इंडियन पेंटिंग करके UGC के लिए 12 फिल्में बनाई। उसमें अनुभव ये हुआ कि मैंने गुलाम शेख से कहा कि आप हमजा नामा पे बोलिए, रामचंद्रन से कहा आप अजंता में बोलिए। तो वो एक जक्टा पोजिशन था उस फिल्म में। अनफॉर्चुनेटली उस फिल्म की DVD नहीं है, लेकिन बाद वाली फिल्म्स की DVDs हैं। NGMA के लिए हमने फिल्में बनाई और मेरा ख्याल है कि PAG पे जो फिल्म है वो बहुत क्लासिक है, लेकिन राजीव मोहन उसका DVD कभी नहीं बनाने को तैयार हुए हैं। आज एक्चुअली मैं अकेडमी के तंत्र से बोल रहा हूँ, मैं यहाँ काम भी कर चुका हूँ, गेस्ट एडिटर भी रह चुका हूँ। इन दोनों संस्थाओं से काम करना आसान काम नहीं है। NGMA में आप देखिए कि क्रिएटिव आदमी डायरेक्टर था, आज तक उसकी DVD अवेलेबल नहीं है और कोई चाहता भी नहीं कि उसकी DVD देख ले। धन्यवाद। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि 40 साल तक ही अपने बारे में बताना चाहिए, बाकी सुनना चाहिए कि लोग क्या कहते हैं। फिर भी इस औपचारिकता को निभाते हुए बताता हूँ कि मैं अयोध्या के पास का रहने वाला हूँ, अभी लखनऊ में रहता हूँ। मेरी आर्ट एजुकेशन लखनऊ आर्ट्स कॉलेज, DHU, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हमने मास्टर डिग्री इन फाइन आर्ट्स किया, रोहिलखंड से PhD और खैरागढ़ से DLit। अपने अध्ययन काल में मुझे लगा कि कला समीक्षा मूलतः यह अंग्रेजी भाषी मामला है, हिंदी में कुछ मिलता नहीं है और हिंदी भाषी लोगों को बड़ी समस्या होती है। ये सोचकर मैंने कला दीर्घा आर्ट जर्नल सन 2000 में शुरू किया, तब से ये कंटिन्यू चल रहा है। और ये केवल हिंदी बेल्ट में न रह जाए, इसका ये बाहर भी जाए, इसका एक्सपोजर बाहर भी हो, इसलिए इंग्लिश भी आदों में शामिल करता रहा। इसके अलावा ललित कला अकादमी का 2 इशू क्षेत्रीय समकालीन कला Part-1 and 2
और राज्य ललित कला अकादमी का जो 2 जर्नल कला त्रैमासिक, और इसके अलावा एक संपादित पुस्तक है कला विमर्श। तो ये मेरी कृतियाँ हैं। मूलतः चित्रकार हूँ और डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। तो पेंटिंग, राइटिंग, एडिटिंग ये पैरेलल काम कर रहा हूँ। कहने को अभी इस पर आगे चर्चा होगी, बहुत कुछ कला समीक्षा के बारे में भी बात की जाएगी, पर ये परिचय का सेशन था, परिचय हो गया, बाकी बातें आगे करते हैं। मैं पटना से हूँ, अवधेश अमन। 1969 में जब मैंने फाइन आर्ट्स कॉलेज में प्रवेश लिया पटना में, उस समय प्रोफेसर बीएन श्रीवास्तव इटली से लौटे थे और वहाँ का अनुभव उन्होंने बताया था। वो हमें कला इतिहास पढ़ाते थे। पिकासो से भी 2 बार उन्होंने वहाँ के मॉडर्न आर्ट मूवमेंट पर बहस की हुई थी। तो वो सब संस्मरण सुन कर के मैं प्रेरित हुआ और उन्होंने मुझे कला पर लिखने के लिए भी प्रेरित किया। 1970 से मेरे लिखने की शुरुआत हो गई और तब से लगातार लिख रहा हूँ। शुरू में छोटी छोटी टिप्पणियाँ लिखता था। 1972 में प्रयाग शुक्ल जी से मेरी भेंट हुई दिनमान में। दिनमान में प्रयाग जी कला पर लिख रहे थे। विनोद जी उन दिनों फिल्म पे ज़्यादा लिख रहे थे। तो प्रयाग जी ने भी मुझे प्रेरित किया और दिनमान में भी बिहार से कुछ टिप्पणियाँ हमारी कला पे उन्होंने क्रमशः प्रकाशित की। उसके बाद तो सिलसिला ऐसा बन गया कि धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, दिनमान, तमाम पत्रों में, श्री वर्षा, हिंदी एक्सप्रेस, नवभारत टाइम्स, जनसत्ता, हिंदुस्तान, वो एक ऐसा दौर था जिस समय ये अखबार एक परिशिष्ट प्रकाशित करते थे। कला पे एक पूरा पेज वो देते थे और एक लिखने का अवसर था, वो एक दौर था। जो शेट्टी जी कुछ देर पहले बता चुके हैं कि अब जो अखबारों का स्वरूप है वो बदल चुका है। कला के लिए अब जगह नहीं है उनके पास। पत्रिकाएं कुछ छापती हैं। एक दौर में धर्मयुग जैसी पत्रिका ने कला पे विशेषांक या कई पत्रिकाओं ने कला पे विशेषांक प्रकाशित किए, वो दौर था। उस दौर से मैं लगातार लिखता रहा हूँ। ललित कला अकादमी से एक परियोजना के अंतर्गत मिथिला की लोक चित्रकला का अध्ययन एवं सर्वेक्षण मैंने किया। उसमें मैंने 2 साल वक्त लगाया और मेरी एक अच्छी किताब मिथिला की लोक चित्रकला पर 1992 में ललित कला अकादमी ने प्रकाशित की। ललित कला अकादमी ने राधा मोहन पे एक मोनोग्राफ मेरा प्रकाशित किया। डॉक्टर रंजीत साहा ने उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया, जो अंग्रेजी संस्करण भी है उसका। समकालीन कला के अंक 14 का मैं अतिथि संपादक भी रहा। समकालीन कला में क्रमशः मेरे 11 लेख प्रकाशित हैं और मेरे मित्र अवधेश मिश्रा जी की जो कला दीर्घा पत्रिका है, इसमें भी मेरे 12 लेख, शोधपूर्ण लेख प्रकाशित हैं। अभी एक मित्र कह रहे थे कि कला में बहुत भारी भरकम शब्दों की ज़रूरत नहीं है, क्लिष्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन लेखन हर तरह से हो रहा है। गंभीर लेखन भी हो रहे हैं, शोधपरक लेखन भी हो रहे हैं और साधारण टिप्पणियाँ भी हो रही हैं जो अखबारों में छपती हैं। हर किसी का अपना एक पाठक वर्ग है। मित्रों, आकाशवाणी के लिए भी मैं गंभीर काम करता रहा। वहाँ एक संदर्भ और साधना कार्यक्रम आकाशवाणी पटना से होता था। उपेंद्र महारथी, अवधेश कुमार सिन्हा, राधा मोहन सरीखे लोगों का मैंने इंटरव्यू किया जो आज वहाँ के आर्काइव में है। उनकी आवाज़ सुरक्षित, चूँकि उन दिनों दूरदर्शन नहीं था, आकाशवाणी था। आकाशवाणी से मेरी बहुत कला पर बहुत वार्ताओं के प्रसारण हुए। 1 वर्ष पूर्व तक मैं पटना दूरदर्शन से एक कार्यक्रम कला चक्र करता रहा, जिसमें किसी कलाकार के व्यक्तित्व और कृतित्व पर आधे घंटे का कार्यक्रम मैं प्रस्तुत करता था, जो 1.5 वर्षों तक चला। उसके बाद कतिपय कारणों से मैंने उसे छोड़ा, लेकिन निरंतर लिख रहा हूँ कला पे। साथ ही साहित्य भी लिखता रहा हूँ, कहानियाँ भी लिखी हैं, कविताएँ भी लिखी हैं, कई किताबें उस पर मेरी आई हैं। तो इसी तरह का सिलसिला और कला की तमाम जो विधाएं हैं, 5 जो ललित कला की विधाएं हैं, उनके साथ जो समन्वय है आज की चापचूस कला का, उसके साथ के जो अंतर संबंध है, इन पर भी मैंने काम किया है। मेरी भी 3-4 किताबें तैयार हैं।
छत्तीसगढ़ की जनजातीय कला पे एक किताब तैयार है। वही समस्या जिसका जिक्र सेट्टी साहब ने किया कि वो प्रकाशन की समस्या है, खासकर हिंदी में और क्षेत्रीय भाषाओं में। अंग्रेजी की किताबें छापने के लिए लोग आसानी से तैयार होते हैं और छपती भी हैं, और वो उसका कुछ अर्थ लाभ भी होता है, जैसा विनोद जी ने बताया। मित्रों, मेरी कुछ रचनाओं के अंग्रेजी में भी अनुवाद डॉक्टर दीनानाथ पाती ने किए और उन्हें अपनी किताबों में उन्हें शामिल किया, मेरे लेखों को। और टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक थे पटना में उत्तम सिंह गुप्ता, उन्होंने भी मेरे कुछ लेखों के अनुवाद किए हिंदी से अंग्रेजी में। मैं अंग्रेजी का लेखक नहीं हूँ, अंग्रेजी जानता भी नहीं हूँ, सच्चाई ये है। क्षेत्रीय भाषाओं को कुछ थोड़ा समझ लेता हूँ। ये सिलसिला मेरा लगातार जारी है और जारी रहेगा। धन्यवाद। Hello everyone, I am Deepa Gopal Sunil and I am from Palakkad, Kerala. I have a blog called Hues and Shades, and it was launched in 2009. But the thing is, when I started it out, it was just an online journal for my eyes only. That was what I thought. And gradually, I found that I was becoming part of a very large online community of art bloggers. And at that point of time, I just had this feeling that the world was shrinking because I was able to connect with many of them whom otherwise I would not have met in real life. But at the same time, it was widening up a whole new arena, a whole new horizon, a whole new world for me. And I was like a wide-eyed child wondering at things. And I'm actually from a literature background. I have no formal training in art. But the thing is, I'm trying to make it up by attending all the lectures, seminars, everything that is happening around me these days. And I keep shuttling between Palakkad, my hometown, and Cochin, Thrissur, all the colleges, art colleges there. I try to be in touch with what is happening around. And my serious art writing has begun since 2 years, I would say. And I write about, generally about my art ventures, then my art events that is happening in and around. And I also interview a few artists who I get inspired with. And actually, I'm still a curious child, observing, learning, trying out new possibilities, and trying to up my skills. Thank you. আপনাদের সবাইকে আমার নমস্কার। আমি দেবদত্ত গুপ্ত ফ্রম ক্যালকাটা। আপনারা আমার শ্রদ্ধা নেবেন। I am from Calcutta and used to write in Bengali basically, though some of the books are in English, and have curated some shows on Nandalal Bose, Vinod Bihari and Ramkilka Page. From the very beginning, when I was in my class at Rabindra University in the Department of Art History, where now I am teaching, I have felt that there are very few books in Bengali. Then I have decided to write in Bengali on art, analytically on art. And my journey has started from the year 1989, and till today I am writing on art. And presently I am attached with a web portal Bongodarshan, where I am writing on art also. And I have some books. And one of my books in Bengali is based on Khuddu Chatra by Rabindra Tagore, and that is a great publication from Prediction. And that's all. It is very difficult to speak about myself. And thank you all very much, and thank you, sir, that you have asked me to come here. Thank you. Thank you, organizers, and congratulations for organizing a program that is unthought of. I'm Balamani. I did my art history from Baroda Fine Arts Faculty, also my PhD from the same department. Along with the art writing, other things what I do is I worked extensively on museum projects. I'm a curator,
I'm a documentary filmmaker. Now, as far as writing is concerned, I've been writing in English only in art. I explored Telugu writing maybe for the last 7-8 years. I realized I'm actually expressing more and happily, not only about art, travel acts, short stories, day-to-day aesthetics, rituals, festivals, social history, and it's just opened up all the arena for me. Thank you. Namaskar and good afternoon. Thank you very much, the organizers, for making me a part of this discussion. I'm Nandini Ghosh from Shantiniketan, West Bengal. Basically, I was a painting graduate from Kala Bhawan Vishwabharati. Later on only I started studying art history. I did my post-graduation and PhD from MS University, Baroda. Presently, I'm working as a UGC postdoctoral fellow in Vishwabharati University and in the stream of cultural studies. Initially, my interest in research was circulating around the regional model in Bengal. So that gave me a lot of chance to look into art practices therein. Later on, when now I'm working, from the region I'm trying to look into a region within the region. That is, now I'm working on art scenario in Shantiniketan with a more cultural dimension to it. I write both in English and Bengali. I have some articles in my name, but I'm yet to publish a book, but I'm sitting on immense material that can come out as books and all, but I'm waiting for a chance for that. And yeah, that's allowed me. And I have also I had the opportunity to work with the Asia Art Archives in the bibliography project on the Shantiniketan chapter, which also gave me a really good glimpse about Bengali art writing from Shantiniketan. And I think there's a lot of possibilities there to be explored and all. And yeah, and yes, that's all about me to be here. Thank you very much. Namaskar. Myself, Dr. Rajkumar Majindar from Guwahati, Assam. Basically, I'm a painter and printmaker. I studied in Kala Bhawan Shantiniketan and then MS University, Baroda. My writing started since 1990. And then after that I am doing writing on, and recently one of my books is published on art, and my PhD on contemporary printmaking of Assam on 3 printmakers, Odit Singh, Dilip Tamuli and Nanigol Pujari. And I'm associated with 2 bilingual art journals, one is China, which is published since 1976. And another journal is in Bengali and English, which is published since 2011 onwards. That's all. And book is, title of the book is Silpakala, Oitijjo and Adhunikata. This is my book. Yeah, you can go ahead. Maybe the second line, those who are sitting in the second circle, they will start. Okay, thank you. I am Kedar Mishra. I am from Bhubaneswar, Odisha. Actually, basically I am a poet, but in 2003 or 4, when I joined a newspaper, everybody is saying that there is no space for writing. But I faced a very peculiar problem. At that time I had plenty of spaces, but no writer. In Odia at that time Dr. Pathi was writing, Dr. Rabindra Pathi, and very few writers actually, my friend Kapilas and others. And then I started writing about young artists, young painters of that time. Suppose at that time Jagannath Panda, Pratul, Virendra, they were coming up in Delhi. They were very famous in Delhi. People like Vinod Bharadwaj and others, they were writing about them. But in Odisha, hardly anybody knows what they are doing. So, in fact, I was the first person to write about Jagannath Panda in Odia, and it was pretty long. And Jagannath always tells me
that it's only for you that my father recognized me as an artist. So for 10 years actually I continued that column, and then I edited a very largely circulated magazine called Vijaya. There was also an art column there. But basically I am a writer on dance. I do write on classical dance and music, and occasionally on painting. But as an editor, I can say that okay, I have given space to many contemporary artists, and that's my credit, and I'm very proud of that. And I request all of you to not to use this word vernacular. No, this is a very, very vulgar word. Vernacular, which is not learned or literary. And our Indian languages, they are very rich, very creative. So no vernacular, please. Thank you. Namaskar. I am Shyamari Chakra from Bhubaneswar. I have been a journalist for the past 25 years. 15 years I worked with Indian Express, and last 10 years with the Hindu. I have been a reporter for cultural affairs. Besides, also, as you know, to your misfortune and to my fortune, we all become critics also. So that's all about me. I was very fond of writing in Odia. I started writing in Odia, but as you know, as a staffer, we are not allowed to write in Odia. I am very fond of my mother tongue, and I have just started writing in Odia. Thank you. Namaskar, Subha Paran. Good afternoon, everybody. I am Saroj Bal from Bhubaneswar, Odisha. First of all, I would like to thank the authorities of Lalit Akademi and Sahitya Akademi for inviting me. I did my graduation from Conclave University in Odia language and literature. Basically, I write poetry and fiction in my mother tongue Odia. Also write about Indian parallel cinema and fine arts in various Odia journals. I have also a deep passion in painting. I am equally fascinated by words and the landscape. Mostly my works are in digital medium. I have designed more than 500 creative book covers and illustrations for journals. I also edit a magazine namely Samna that brings out both the writings on visual art and literature, photography, composing music, acting in theatres, making biopics on veteran authors are some of my hobbies. I observe more than what I write. I don't have a formal training about art, nor do I have any intimate understanding of the critical aspects of art. Basically, I am a lover of art. I observe the world around me, the landscapes, mountains, birds, the ordinary people and their livings, and try to portray them in art the very well I understand them. For me, one can express himself through different mediums like literature and art with equal efficiency. I always paint what I fail to express in words. As a writer of visual art, I try to analyze the traditional schools of art in Odisha and the contemporary shift in the region in post-colonial situation. I am also fascinated by the new experiments in the field of art and painting that is being undertaken in Odisha by outside influence. It is also interesting the changes in the art form in Odisha during and after colonial rule, and the influence of modern European outlook. As an artist, I try to capture the changing milieu of our region, both through art and literature, in the larger context of tradition and modernity. Thank you all.